Well, the wait and suspense is finally over. Bharatiya Janata Party has announced its Chief Minister's face, and it is Rekha Gupta, the fourth women Chief Minister of the National Capital. In fact, Rekha Gupta is the first-time MLA from Shalimar Bagh, defeated Aam Aadmi Party candidate Vandana Kumari by over 29,000 votes. Now, Rekha Gupta contested the Shalimar Bagh seat in both 2015 and also 2020 Delhi election, but was defeated by Aam Aadmi Party's Vandana Kumari in both the years. But this time, the luck worked out for her. Rekha Gupta cut her teeth in politics with Delhi University student selection. She's a three-time councillor as well and former mayor of the South Delhi Municipal Corporation. She was also pitted by the Bharatiya Janata Party as the MCD mayoral candidate against the Aam Aadmi Party, Shelley Oberoi, in 2022. Listen in to what she said after her name was announced yesterday. I am being joined in by Rekha Gupta. Ma'am, Chief Minister of Delhi, how do you feel? कैसा लग रहा है? बेहद गौरव की अनुभूति हो रही है और ना केवल मेरे लिए बल्कि दिल्ली की हर बहन के लिए, बेटी के लिए ये सम्मान की बात है। और दिल्ली की आधी आबादी की ओर से मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। देश की महिलाओं की ओर से। इलेक्शन के वक्त मैंने आपसे पूछा था कि शालीमार बाग के लिए क्या प्लान है, आज पूछ रहा हूँ दिल्ली के लिए क्या प्लान है? दिल्ली का एक नया अध्याय, एक स्वर्णिम अध्याय शुरू होगा, डेवलपमेंट का, विकास का, और वो अधिकार जो दिल्ली के हैं वो दिल्ली का देने का काम शुरू होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिल्ली के लिए सोचा है, देखा है, उस विजन को पूरा करना ही मेरी कमिटमेंट है। 27 साल, आपको 30 साल से ज्यादा हो गए हैं दिल्ली की राजनीति में। ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको लगता है आपको करना अति आवश्यक है? यहाँ से 12 साल में दिल्ली कई कदम पिछड़ चुकी है और वो सारी चीजें जो दिल्ली की अपेक्षाएं हैं, चाहे वो पानी हो, रोड हो, यमुना हो, पहाड़ हो, ये सभी काम दिल्ली की जरूरतें हैं और वो काम पूरे होने चाहिए। यही हमारी कमिटमेंट है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैम, जाने से पहले कल आप शपथ लेंगी, आपका कैबिनेट भी एक तरह तैयार है, पहले 30 दिनों में क्या क्या करना है? ये एक बहुत बड़ा विषय है जो कि हम अपनी पूरी टीम के साथ बैठ के नेतृत्व के साथ प्लान करके करेंगे। और फिर कहना चाहूंगी, जो भी दिल्ली के साथ में हमने कमिटमेंट किया है उन सभी कमिटमेंट्स को पूरा किया जाएगा। Now let's tell you more about who the Delhi Chief Minister Rekha Gupta actually is. She is a very prominent leader of the Bharatiya Janata Party. Remember, she won the Shalimar Bagh seat with 68,200 votes quite recently. In fact, she defeated the Aam Aadmi Party candidate. She is currently serving as the General Secretary of the Delhi BJP. Quite a known leader in Delhi BJP. She previously served as the Bharatiya Janata Party's Mahila Morcha Vice President back then. Other than that, let's get you more as far as Rekha Gupta is concerned. She has been a councillor as well. She served as the South Delhi Municipal Corporation mayor. So she was both a mayor and also the councillor. In 2007, in fact, she won the councillor polls for the Uttari Pitampura seat. So she's been a councillor, a mayor and now a chief minister. She was re-elected as the councillor in Delhi in the 2012 and then 2022 polls. So she's been a two-time councillor. She is served as a former president of the DU Student Union, and that is how she started her career in politics, and that was in fact through the student politics. Now let me go across to my colleagues Bhavna, Isha and Shivam, who join us live on the broadcast with more details. Firstly, coming to you, Bhavna. Bhavna, आप रेखा गुप्ता के घर के बाहर है, वहां से रिपोर्ट करिए। कल रात काफी लेट अनाउंस हुआ है उनका नाम। क्या अभी भी हम वहां पे सेलिब्रेटरी मूड देख पा रहे हैं? आकांक्षा, बिना देर की आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि मिलने जुलने वाले लोग जो है रेखा गुप्ता से पहुंच रहे हैं। हाथों में आप फूल देख सकती हैं। इसके साथ ही धीरे धीरे जिस तरह से सुबह हो रही है और समर्थकों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि आज 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। ऐसे में उनसे मिलने वाले लोग तो पहुंच ही रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर तमाम समर्थक उनके पहुंचे। क्या नाम है सर, कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है? कल रात काफी लेट अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन कितनी खुशी की लहर? मैं वहीं था, हाँ जी, प्रदेश कार्यालय में 14 पंथ मार्ग पे। मेरे को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इनकी मेहनत सफल हुई। आज इन्होंने बहुत मेहनती लेडी हैं और एक गुस्सा नहीं होती,
अपने काम को काम समझ के ही काम करती हैं। आप उनको काफी सालों से जैसे मैं 28 सालों से उनको जानता हूँ। मैं पीतमपुरा में रहता हूँ। मैं भी 37 साल से पीतमपुरा में, और पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, बीजेपी से। पार्टी से जुड़े हुए हैं, 28 साल से जानते हैं। क्या लगता है कि उनके नेतृत्व में दिल्ली में विकास किस तरह से होगा? चौमुखी विकास होगा। जिसे हम रेखा जी को पिछले 15-20 सालों से जानते हैं, उनकी कार्य क्षमता को जानते हैं। वो 3 बार दिल्ली यहाँ इस क्षेत्र की काउंसलर रही हैं, तो हमने उनके काम कार्य को देखा है, समझा है कि वो इतना अपने काम को इतना कर्मठ होगा, इतना जुझारू के करती है, और इतनी क्षमता उनके अंदर लड़ने की। वो मिलने के लिए आए हैं, बधाई देने के लिए आए हैं। क्या बातचीत हुई थी कल फोन पे? अरे कल बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन अभी बात हुई है, वो भी नीचे आ रही हैं। और पश्चिम बिहार से आए हैं हम लोग, युवा मोर्चा से हम लोग साथ ही हैं। उसके बाद संगठन के विभिन्न स्तरों पर हमने इकट्ठे काम किया है, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है। और एक्सपीरियंस बढ़िया रहा है, लेकिन अब महिला मुख्यमंत्री वो किस तरह से देख रहे हैं कि महिला चेहरे पे मोहर लगी है? हमारी छोटी बहन है वह, और हम लगभग 20 सालों से उनके साथ में काम कर रहे हैं। उनका काम करने का तरीका ही अलग है बिल्कुल। वो मतलब उन्होंने अपना नाम बनाया है, अपना काम से उनका नाम है। जो काम वो किए हैं उन्होंने अपने क्षेत्र में किए हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में किए हो। वो महिला मोर्चा अध्यक्ष से रह करके अब राष्ट्रीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रही। ठीक है, तो आप देख सकती हैं कि आकांक्षा किस तरह से यहाँ पर समर्थकों से बात करते हुए, कि फिलहाल उनके घर के बाहर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। AP 92 के बाहर की लोग हाथों में गुलदस्ता लिए हुए पहुंच रहे हैं, तो यानी कह सकते हैं कि मिलने जुलने वालों का तांता लगना शुरू हो चुका है। ये भी कहा जा रहा है कि थोड़े देर में रेखा गुप्ता अपने घर से नीचे निकलेंगी, इन लोगों से मुलाकात करेंगी। निकलने के वक्त की बात करें तो ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि रामलीला मैदान कब तक निकलेंगी, लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि सुबह के 7 बज रहे हैं और उनके घर के बाहर भीड़ जो है वो इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी है। जी Well, absolutely, Bhavna, Isha and Shivam, stay on with us. After the announcement of the Chief Minister, all eyes are on the oath-taking ceremony. The oath-taking ceremony is slated to start at 10 a.m. at Ramlila Maidan. LG VK Saxena will administer this oath of office to Delhi Chief Minister designate Rekha Gupta and Council of Ministers. Now, according to the sources, and this is the breaking news that we are getting for you, Parvesh Singh Verma, Manjinder Singh Sirsa, Ravinder Indraj Singh, Kapil Mishra, Ashish Sood, Pankaj Singh are likely to take oath as the cabinet ministers today. So the oath-taking ceremony will start at 10 o'clock is what we are learning. And Rekha Gupta, as per the sources, will be taking oath as the chief minister at 12:45 p.m. So very, very crucial day. Now going across to my colleague Isha, who joins us live on the broadcast with more details. Isha, Rekha Gupta is all set to take oath as the chief minister of the national capital today. A very crucial day for the Bharatiya Janata Party, as they will take charge of the national capital after 27 long years. Right, Akanksha. So after 27 years, the lotus has bloomed in the national capital, and the national capital will be getting a new chief minister after 12 years. In fact, as you were also pointing out, there are several names that are propping up for the cabinet ministers as well. Manjinder Singh Sirsa, Ashish Sood and Parvesh Verma. In fact, these were all candidates whose names were also in the fray for the position of the chief minister, but now they will be taking oath as cabinet ministers, and they will be working under Rekha Gupta. But of course, a very forward move when we look at the appointment of this particular chief minister. She is only the 4th female chief minister of the national capital, and the LG will be administrating the oath to her at around 10:30 to 11 a.m. today morning. But as you also, Bhavna was also pointing out, there is a lot of excitement that finally somebody who's been a part of the BJP for so long is getting her due. In fact, giving our viewers a little bit more context about Rekha Gupta, she has a strong backing of the RSS. She's 50 years old, and she's spent about more than 30 years in the Sangh in the RSS. So that also is something that has been detrimental to her. But today, key leaders to take oath, and the BJP all set to form the government in the national capital. Well, absolutely, Isha. Thank you for all the details. We'll keep coming back to you for more on this. Now, let's talk more about the oath-taking ceremony, because the venue is Ramlila Maidan. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and other Union Ministers are expected to attend this event that will take place today. Chief Ministers and Deputy Chief Ministers from NDA-ruled states will also be invited for this as far as the oath-taking ceremony is concerned.
joined in by Manish Gupta. Manish sir, your wife is the Chief Minister of Delhi now. Your wife is Chief Minister of Delhi. How is the feeling now? How is the feeling now? ये तो बहुत खुशी का मौका है इसमें तो अरे हम यहीं के निवासी हैं। Now the major question is, what are the expectations? Manish ji, what are the expectations from here? पंडित जी जय हो। आज बहुत अच्छा है कि सबको ये गर्व है। अभी हाँ बता नहीं पाएंगे। आदरणीय रेखा गुप्ता जी को आज विधायक दल का नेता चुना गया है। मेरी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई, उनका अभिनंदन। मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में रेखा जी दिल्ली में विकास के एक नए अध्याय को रेखांकित करेंगी। न केवल महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय रचित करेंगी, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है विमेन लेड डेवलपमेंट, यानी महिलाओं के नेतृत्व में देश के सशक्तिकरण का विजन, उसको भी चरितार्थ कर दिल्ली में दिखाएंगे। ये बहुत गर्व की बात है। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिसने वोट दिया उन सबके लिए सम्मान की बात है, भारतीय जनता पार्टी के सम्मान की बात है और दिल्ली के लिए सम्मान की बात है। विजेंद्र गुप्ता ने प्रस्ताव किया और बाकी प्रस्ताव आते ही वो खुशी देखने लायक थी और सभी लोगों ने रेखा गुप्ता को सर्वसम्मति से 9 लोगों ने अनुमोदन किया और बाकी सबने स्वीकार। दिल्ली की जनता पिछले 10 दिनों से इंतजार कर रही थी कि उनको नया सीएम कब मिलेगा। आज अंततोगत्वा उनका इंतजार पूरा हुआ है। दिल्ली के 9 निर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों के लिए वादे किए हैं वो जिम्मेदारी के साथ उसे पूरा करेंगी और दिल्ली के लोगों के लिए जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने काम किए थे उसको आगे बढ़ाएंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और मैं उम्मीद करती हूं कि जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को किए हैं उन वादों को वो जरूर पूरा करेंगी। और मैं रेखा गुप्ता जी को आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहना चाहूंगी कि दिल्ली वालों के विकास के लिए उन्हें कोई भी मदद, कोई भी समर्थन आम आदमी पार्टी की तरफ से चाहिए हो तो उनको हमेशा मिलेगा, जरूर मिलेगा। Now let me bring in my colleague Shivam, who joins us live on the broadcast from Bharatiya Janata Party's headquarters. In fact, Shivam, the venue is Ram Leela Maidan. Now it has seen several governments come and go. Preparations are going on there. But tell us what the mood is like at the Bharatiya Janata Party's office. Well, good morning, Akansha. And it has been a trend, especially with the BJP, that they announce a CM candidate, they announce a CM face, and then all the media institutions, all the political pundits gets involved in finding out the history, because not a lot of popular faces or faces who have been on the forefront of the contest comes up. But this time it was a relatively known face, a face which was already present in the contest. We are currently reporting from the BJP headquarters, BJP Delhi headquarters, where the entire storyline of putting Rekha Gupta as the CM face of the national capital was written. Now you see not a lot of people here, because the action is going to shift from here to the Ram Leela Maidan, as you mentioned, but this is exactly the place from where the name of Rekha Gupta was recommended yesterday in the Legislative Assembly meeting of all the MLAs. And because Rekha Gupta is taking majority of the boxes, as we mentioned, the experience that she holds, especially as a ward councillor and as a mayor of a particular part in the national capital, she has been actively involved in the RSS in the Delhi politics. So you needed somebody who knows how the administration of this union territory, where the powers are split between the centre and the state, works. Second one, she is a woman candidate now. She is the only women chief minister in all the BJP-run states and union
territories for now. So BJP has, at least for now, pushed forward their agenda that they are working towards women empowerment, because remember, women empowerment was one of the most crucial, promises, one of the most crucial issues in this particular poll at the national capital, be it from the Aam Aadmi Party, who announces 2,100 rupees per month, and then the BJP coming in announcing that they'll be giving 2,500 rupees per month to all the women in the national capital. So these are certain things that have made Rekha Gupta as the forefront runner, and now today she will be taking the oath along with the cabinet of ministers, which according to our sources are Pravesh Verma, Ashish Sood, Manjinder Singh Sirsa, Ravinder Indaraj. And when you see the cabinet also, you understand that there has been an intentional effort made to talk to almost, to appeal to almost all sections of the society. Right. Sirsa coming from the Sikh community, Ravinder Indaraj coming from the Dalit community, as well as Ashish Sood coming from the Punjabi community, and Pravesh Singh Verma, who was a front runner for the CM candidate as well, coming from the Jat community. So you see, BJP has intentionally tried to put people or representatives from every section of the society in the cabinet as well, according to the sources what we are letting you. This has been a trend with the BJP, that they try to appeal each and every section of the voter in the national capital, on other states also where they have formed the government. So far it looks like six MLAs along with Rekha Gupta going to take oath today at so the a big day Ramlila for the Bharatiya Janata Party. The party will take charge of the national capital after 27 long years. Thank you, Shivam, for all the details. We'll keep coming back to you for more on this. Now let's tell you more about how women in the national capital voted for the Bharatiya Janata Party, Aam Aadmi Party and the Congress Party in 2025 and the last few polls. So as far as 2025 is concerned, so this is 2025 women votes are concerned. As far as Bharatiya Janata Party is concerned, in 2025 they got 43% of the votes, up from 35% in 2020 elections. As far as Aam Aadmi Party is concerned, there in fact the percentage has definitely come down from 60% in 2020 to 49% in 2025. If we talk about the Congress Party, it has gone up by 2%, 3% in 2020, as you can see, and 5% in 2025. So if we talk about the women vote in the national capital, the percentage as far as Bharatiya Janata Party is concerned, that has definitely gone up by 8% for the Bharatiya Janata Party, has come down by 11% for the Aam Aadmi Party. Now remember, Rekha Gupta is both a woman and also from the Bania community, and hence we are showing you this. Now let's talk about how Banias voted in the national capital. If we talk about 2015, BJP, 60% of Banias voted for them. It came down by 7%, but now it has gone up by 6% if we compare it with 2015. Aam Aadmi Party, 31% in 2015. It went up in the last elections by 42%. Now it has, you can see, drastically come down to 25%, from 42% in 2020 to 25% in this very election. Congress, 7% in 2015, 1% in 2020, and again they have retained it back to 7% in 2025 elections. So Rekha Gupta is a very important figure. She is a woman and she's also from Bania community. Bania community is a core voter base of the Bharatiya Janata Party. Now today is the oath taking ceremony. Rekha Gupta will take oath as the Chief Minister of the national capital. BJP will take charge of the national capital after 27 long years, and we will keep you updated on all of these details. With this, we're taking a short break. We'll be right back with more news and updates. Stay with us.